बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने पिछले लेक्चर्स में हमने मेथड्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में स्मॉल लेवल प्रोजेक्ट्स की बात की, सेल्फ हेल्प की बात की। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इससे कुछ मिलती जुलती ही है, जिसमें हम लोकल लेवल कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि लोकल लेवल है क्या, हम लोकल लेवल किसे कहते हैं और लोकल लेवल कम्युनिटी डेवलपमेंट किसे कहते हैं। There are 7 levels of social development. As a student of social sciences, हमें social development के बारे में भी पता होना चाहिए कि social development क्या होती है. Social development from international level to local level. Although all these levels are important, and social development should occur at all levels. But our focus is on understanding what local level is. क्योंकि जब तक लोकल लेवल डेवलपमेंट को हम अचीव नहीं कर सकते, हम इंटरनेशनल की तरफ नहीं पहुंच सकते. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड लोकल लेवल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट. लोकल लेवल refers to the majority of grassroots level communities and villages in both rural areas and parts of urban areas. The local level may also be conceptualized in terms of individual, families, groups, and communities, given the importance of all these types of units in their engagement in the majority of situations covered under the local level community development. ये एक पैरामिड है जिसके अंदर आपको वो तमाम लेवल्स नज़र आ रहे हैं जिसमें डेवलपमेंट होती है. तो सबसे टॉप जो पैरामिड की कोन है, जहाँ पे पीक है, वहाँ पे आपको पता चल रहा है वो इंटरनेशनल लेवल है. उससे नीचे नेशनल लेवल, देन स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड लोकल लेवल. जिसमें हमने बात की थी कि विलेजेस आ सकते हैं, स्मॉल विलेजेस आ सकते हैं, ग्रॉस रूट लेवल कम्युनिटीज़ आ सकती हैं, फैमिलीज़ आ सकती हैं. तो ये एक पैरामिड है, ये एक सोशल डेवलपमेंट की एक पैरामिड है जो लोकल लेवल से शुरू होकर इंटरनेशनल लेवल तक जाती है. इन सोशल डेवलपमेंट टर्म्स, it is important to see development of local level as not only the development of very foundation of a society, but also as building at the local level are receptive to national development initiatives. Thus, it is a two-way process. On one hand, national level development creates opportunities that then exist for individual and groups to take advantage of. और ये किस चीज़ के एडवांटेजेस हो सकते हैं? दीज में भी कैपेसिटी बिल्डिंग, कि आप लोगों की या कम्युनिटीज़ की जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं. कैपेसिटी बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ एज थ्रू असेसिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम. इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ एज थ्रू इंगेजिंग इन द इमर्जिंग एम्प्लॉयमेंट मार्केट, कि आप उनको एम्प्लॉयमेंट मार्केट के अंदर इमर्ज करते हैं. और द परसुएंस ऑफ द पर्सनल ग्रुप इंटरेस्ट थ्रू द अपॉर्चुनिटीज़ made available by national level development, such as those offered by urbanization and international links. On the other hand, effective national level development also reaches out to localities through the provision of services and opportunities. However, the ability of the local level to be receptive to these will depend in large part on the extent of एग्जिस्टिंग लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग. लोकल लेवल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम एग्जिस्टिंग जो उनकी कैपेसिटी है उसको डेवलप करते हैं ताकि नेशनल लेवल डेवलपमेंट को हम मीट कर सकें. बिल्डिंग एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, दैट इज टू से आवर लोकेलिटी नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द पार्टिसिपेशन इन अ मेन स्ट्रीम नेशनल लेवल डेवलपमेंट. जब लोकल लेवल को डेवलप करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलप होगा, देन स्टेट लेवल, नेशनल लेवल एंड देन इंटरनेशनल लेवल को आप अचीव कर सकते हैं. Hence, the role of local level community development through a social development approach is to achieve both of the goals, namely the preparation of localities for full and effective participation in whatever national or state level development offers, and preparation of entities that constitute a locality to enable them to reach out and take advantage of emerging opportunities beyond the local level. तो आप local level development में लोगों को इस तरह तैयार करते हैं
ताकि वो मेन स्ट्रीम जो डेवलपमेंट हो रही है उसके अंदर पार्टिसिपेट करके अपना शेयर जो है वो हासिल कर सकें। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर जो लोकल लेवल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब तक आप लोकल लेवल को डेवलप नहीं करेंगे, आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल डेवलपमेंट के टारगेट को जो है वो अचीव नहीं कर सकते। उम्मीद करती हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। आगे भी जो हम जो अगले कुछ लेक्चर्स करेंगे आइंदा कुछ दिनों में, वो इसी की ही कंटिन्यूएशन होगी। थैंक यू वेरी मच।